Hello everyone, today we will start a new chapter and the name of the chapter is Forest and Wildlife in India. Let's begin the chapter. Chapter 6 Forest and Wildlife in India. My learning plan, forest, types of forest, wildlife in India, importance of forest, conservation of. Warm up, you have to name the following animals. This is a lion, elephant, zebra, deer. Now forest. Forest एक large area होता है land का which is thickly covered with trees. Everywhere in the forest there are a lot of trees. Forest, they are an important part of our environment. Forest, what is forest? Forest, they are very important part of our environment, which provides us many, which provides us बहुत से हमें useful things वो provide करता है. Today, forest cover about 1/5 total land area of our country, and these are an important gift of nature. Now, importance of forest. Forests make the climate cool and pleasant. They freshen up the air by providing oxygen. How we make the environment clean? By planting more and more trees. That will make the air more fresh and clean for breathing. Forests help in causing the rainfall. Without forest, earth would become a hot desert. टिम्बर और वुड एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. वुड हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स बनाने के लिए. सॉफ्ट वुड हम यूज करते हैं क्रेट्स, मैचस्टिक्स, पेपर एंड प्लाईवुड के लिए. फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को शेल्टर. पार्ट्स ऑफ सम ट्रीज सच एज नीम आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन. फॉरेस्ट हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन में. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. इंडिया ऑक्यूपाई करता है 10th पोजीशन वर्ल्ड में और 4th है एशिया में अगर हम प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें. मेनली 5 टाइप्स होते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन रहता है पूरे साल, तभी उसका नाम एवरग्रीन है. ये फॉरेस्ट हॉट और ड्रेनी एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पर रेनफॉल होती है कम से कम भी 200 से, इसलिए उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. इंडिया में ये जो फॉरेस्ट है ये फाउंड किए जाते हैं स्लोप्स, वेस्टर्न घाट्स पर, ऑन द नॉर्दर्न हिल्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड. ट्रीज बहुत टॉल होते हैं और एक दूसरे के बल्ले ये ना लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत पास डिस्टेंस बहुत कम होता है इनके बीच. उनकी जो वुड होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, यूजफुल होती है फर्नीचर बनाने के लिए. Main trees of these forests, they are rosewood, sandalwood, teak, bamboo, mahogany and ebony. Deciduous forest. The trees of these forests shed their leaves during the dry season of the year. They are also called monsoon forest भी कहा जाता है. They are mostly found in Deccan Plateau and foothills of Himalayan mountains. Main trees जो है इन forest के they are साल, शीशम, महुआ. उनकी wood soft है, expensive है, इसे हम use करते हैं for making furniture. माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज और इन सम पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स. इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं. दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स. मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट होते हैं देवदार, पाइन, फिर एंड स्प्रूस. वुड बीइंग सॉफ्ट होने के बाद भी इसे यूज किया जाता है फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड मेकिंग लाइट प्लाईवुड. फिर आते हैं टाइडल फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज मैनग्रोव फॉरेस्ट. दे आर मोस्टली फाउंड होते हैं डेल्टाज ऑफ रिवर्स और इन एरियाज ऑफ फ्लडेड बाय सी वाटर. मेन एरियाज आर डेल्टाज ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट बंगाल. फॉरेस्ट यहाँ पर उनको हम सुंदरबंस भी कहते हैं, जो सुंदरी ट्रीज के नाम पर रखा गया, जो यहाँ पर लार्ज नंबर में ग्रो होते हैं. थॉर्न फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट होते हैं ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री में, क्योंकि ये ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहां पर रेनफॉल जो होती है 75 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है. तो जितनी रेनफॉल कम होगी, ग्रीनरी उतनी कम होगी, उतने ही वहां पर थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी प्लांट्स ग्रो होंगे, जैसे कि कैक्टस. द ट्रीज एंड shrubs have their very thick skin, long thorns and spines and roots that go deep under the soil to find water as rainfall is scanty. क्योंकि पानी वहां पे पानी कम होता है, तो बारिश नहीं होगी तो वाटर टेबल भी बैलेंस नहीं होगा, ग्राउंड वाटर भी बहुत कम होगा. तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत डीप तक जाती हैं ताकि उन्हें वाटर मिल सके. थॉर्न फॉरेस्ट आर मोस्ट कॉमन होता है डेजर्ट एरियाज में. राजस्थान कॉमन एग्जांपल है. बबूल, कीकर, वाइल्ड पाम, कैक्टस, जंगली पौधे और कांटे वाले पौधे ज्यादा आपको उसी जगह पर मिलेंगे जहां पर रेनफॉल कम हो. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. आर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फास्ट रेट पर और अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को भी मीट किया जाना चाहिए और करना पड़ता है उसी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को,
ताकि अब मोर एंड मोर ट्रीज को काटा जा रहा है, क्यों? लैंड की दिक्कत आ रही है, जिसका रिजल्ट हमारे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा है डे बाय डे। कंट्री शुड हैव एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए टोटल लैंड एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट। So we should control deforestation, that is cutting off trees. Deforestation has led to many problems. Soil has become barren and dry. It has led to displacement of extinction of large variety of birds and animals. It leads to less rainfall and less oxygen in the air. To maintain a healthy and clean environment, you have to maintain, so we should grow more trees. Chipko movement was started in 1974 by Sundarban Bahuguna in Chamoli in Uttarakhand to protect trees को protect करना from being cut down. Villagers जो है इस एरिया के, they put their arms around trees in this movement and they were successful in saving them. सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट भी इंकरेजेस पीपल ताकि वो ज्यादा ट्रीज को प्लांट करें अलोंगसाइड रोड्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। वन महोत्सव अनदर प्रोग्राम है जो हर साल सेलिब्रेट होता है एट द बिगनिंग ऑफ मॉनसून, में नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट किया जाता है एंटायर कंट्री। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ मीन्स बर्ड्स एनिमल्स जो फ्रीली रह रहे हैं इन द नेचुरल एनवायरमेंट। अनफॉर्चुनेटली वाइल्ड लाइफ इन इंडिया ने बहुत सफर किया ड्यू टू सेल्फिश ह्यूमन एक्ट्स, जैसे कि जितने हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है। क्यों? द एनिमल्स आर कमिंग इनटू द सिटीज जस्ट बिकॉज देयर होम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। हंटिंग, पोचिंग, so some people hunt wild animals for pleasure while other kill them for commercial purpose. लोग अपने कमर्शियल पर्पस के लिए, उनकी स्किन के लिए, कोई उनके टस्क के लिए, जैसे एलिफेंट्स को, तो अलग अलग कारण है सबके पास हंटिंग का, बट दैट शुड बी बैन एंड दे आर illegal and they are still banned at some places, but still people are hunting animals. Deforestation makes number of wild animals homeless बनाते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को। This is leading to the extinction of certain animals and birds and some are in the danger of becoming extinct. कुछ animals birds अब खत्म हो चुके हैं इसी कारण की वजह से और कुछ अभी भी खत्म होने की पॉइंट पर है। So hence, to protect and preserve our wildlife, the government is taking strict action against deforestation and hunting. So hunting banned है and poachers are punished severely. Also, many national parks, sanctuaries, they have been set up all over the country to protect the wildlife in forest areas. Sanctuary. Sanctuary is an area where wild animals or birds को भी protect to live in there ताकि वो अपने natural environment में रह सके. No one is allowed to disturb or kill the animals in these forest areas. Present में there are number of national parks and sanctuaries in India. Some of the famous national parks and sanctuaries are given below. Tidbits, Kebo Lamjo is a floating national park, Manipur. मणिपुर में ये एक national park है, Kebo Lamjo, वो पानी में है, it is floating. India has 573 wildlife sanctuaries and 106 national parks. इनमें से कुछ major यहाँ पर है। अचानकमार सेंचुरी दैट इज इन छत्तीसगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटक एंड तमिलनाडु, बानरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, लचिंगम सेंचुरी कश्मीर, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, घना बर्ड सेंचुरी राजस्थान, गिर फॉरेस्ट गुजरात, जलपारा सेंचुरी वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, मानस सेंचुरी असम, पेरियर सेंचुरी केरला, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु एंड चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी ओडिशा. Let's do the new words. Extinct is the animals that are no longer living anywhere on the earth. Delta, land formed at the mouth of a river at increased waters and soil in the sea. Landslide, a collapse of rocks and soil from a mountain. Wildlife sanctuary, forest area set up by government to protect wildlife. Quick bites. Forest is a large area of land which is thickly covered with trees. Tidal forest को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. Thorn forest are also known as desert forest. Pine, deodar, and spruce fir, they are some of the conifers that grow in coniferous forest. Forests make the climate cool and pleasant and provide oxygen to the atmosphere. Sanctuary is an area where wild animals and birds, they are protected to live in their natural environment. Now come to let's work to do. Take the correct option. Thorn forests are mainly found in Rajasthan. Dash are also called tropical rainforest, evergreen forest. Gir forests in Gujarat are famous for lions. Sal, Shisham and Mahua are the main trees of deciduous forest. Let's come to fill in the blanks.
A dash is a large area of land which is thickly covered with trees. That is forest. Dash is a well-known mangrove tree. Jim Corbett National Park is in Uttarakhand. Deciduous forests are also called dash forest, monsoon. Forest provides shelter and habitat to wild animals. Now let's do the true and false. Deciduous forests are mostly found in Deccan Plateau and foothills of Himalayan. True. Tidal forests grow in areas with rainfall less than 75 centimeter. False. Wild animals are safe in wildlife sanctuaries. True. Pine and deodar are found in coniferous forest. False. Forests are responsible for soil erosion. False. Now let's come to the match the following. So Peria, Kerala, Manas, Assam, Jim Corbett, Uttarakhand, Kahana, Gujarat, and Gir Forest, Madhya Pradesh. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.